Okay, so today we are going to discuss about a very new concept, and हम लोग आज basically METAcademy, that means एक new course के बारे में जानेंगे, and थोड़ा सा कुछ time लूँगी आपका in order to discuss with you few of the important things. Generally हम अभी तक जो study करते आए थे, whatever the pattern that we were studying was हम सबको पता है that it is in the mode of 3D models and 3D technologies के through में था. Now this अब से जब once this session of your dissect batch is going to end up, we are going to full-fledgedly start with a very new fresh batch जिसमें हम पूरा 11th and 12th standard आपका biology का cover up करेंगे. उसके पूरे course को we are going to study and finish it, and that batch is going to start from your 18th May. All right. So basically, as you can see over here, so this batch is basically going to start from your 18th May, and that will be both for your 11th and 12th biology. All right. And for that part, इसमें हमारा 3D classes के through, that means 3D models के through specifically, we will be covering the entire biology syllabus. And that will be, that will be throughout the entire year ये हमारा जाएगा. All right. And इसमें जैसे कि as you can see here, आपको दिख सकता है कि अलग-अलग models होते हैं, ठीक है? Like for example, we are taking up a chapter of human reproduction today. So models के through, along with specific, we will be covering up all the NCERT's part. तो models के through हम NCERT को target करते हुए our preparation will be there. All right. So that is the case. And the name of this batch, which we are going to start up, is basically the interact batch. All right. So this is the interact batch that we are going to talk about. यहाँ पर आप देख सकते हैं. You can see over here. So this will be for both physics, chemistry, for all of the three subjects. That means physics, chemistry, and biology. All right. And apart from that, apart from the live lectures that will be going on, live lectures के अलावा you will be provided with all the notes as well, PPTs, notes, daily practice papers, DPPS भी आपको provide किए जाएंगे, so that you people can practice as well. आपकी practice भी होती रहेगी, and as well as आपके preparations भी full swing पे चलेंगे. That is the case. So you can see the live demonstrative classes chalenge along with that part, and you will be also provided with the 3D interactive notes over here. Okay, so this is the case. All right. Now, so आज let us just start with the concept of the human reproduction, क्योंकि मैंने आपको already बताया कि हम लोग human reproduction की बात करेंगे. तो human reproduction में we will be specifically talking about the male reproductive system. तो यहाँ आपको दिख रहा है जब हम 3D मॉडल से चीजें पढ़ते हैं तो हमें चीजें बहुत कन्वीनियंट हो जाती हैं. Like for example, we can use different tools, है ना? Like for example, अगर हमें सिर्फ मॉडल देखना है तो we can slice out this part, we can maximize this portion, है ना? इस part को maximize करके we can just move the model like this, and हमें each and every part बहुत specifically नजर आती है. That is the best part of this technology, है ना? फिर उसके बाद if I want to drag any part of the model, like if I want to drag this part or if I want to drag this part, and specifically अगर मुझे individual components दिखाने हैं, label करने हैं, तो we can analyze it very well. So, and again we can just combine all the components together in this lecture. तो ये सबसे खास बात हो जाती है इस lecture की. All right. So, okay then. Let's start with the very first important part, and that is your male reproductive system. All right. So जब हम male reproductive system की बात करते हैं, so पहले तो मैं आपको एक overview दिखा देती हूँ that exactly where the male reproductive system is exactly where it is located. ठीक है? And for that part, we can just minimize this model a little bit. Like this, ठीक है? So you can see कि जो हमारा जो male reproductive system होता है, the human male reproductive system is basically situated in the lower abdominal area or the lower pelvic region में इसका localization होता है.
So this is the region where it has been localized. तो ये basically हमारा जो location होता है, this is in the lower abdominal area. All right. So lower abdominal area भी बोल सकते हैं या इसको हम pelvic area भी बोलते हैं. So this is actually in the pelvic area part where the entire human male reproductive system is localized. All right. Now, when we talk about the male reproductive system primarily, जिसको अगर हम short में MLS लिखें, so entire male reproductive, male MRS actually, not MLS, it's MRS, male reproductive system. So this entire male reproductive system is divided into few components like testis, all right. Then there is accessory ducts. Then there are accessory glands. All right. And of course, your external male genitalia. तो कई पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है, तो वी विल बी सीइंग कि ये आज हम देखेंगे कि इनका लोकलाइजेशन कहाँ कहाँ पर है. वी आर गोइंग टू सी दैट पार्ट फर्स्ट. ऑलराइट, हम उसके बारे में पहले आज बात करेंगे. ठीक, तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन चारों पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड योर एक्सटर्नल मेल जेनिटलिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी ओवर हियर दैट इट हैज बीन डिवाइडेड इन द, ये बेसिकली लोकलाइज्ड होता है पेल्विक रीजन में. वी कैन जस्ट मैक्सिमाइज दिस पार्ट एज वेल लाइक दिस. So this is usually localized in the pelvic area, है ना, यहाँ पे mentioned है, and along with the different components which is mentioned over here. Now let us see कि testis का location exact कैसे होता है and why it is important with that part. And for seeing that purpose, we can just slice out this part. ये skin part हम हटा सकते हैं, and we can just maximize this model a little bit. Like this, okay, and we can just flip this model. All right, and yeah, so we can just shift this model in the center so that it becomes convenient for you. ये होता है, ठीक है. Now, if I just drag out the male component, that means मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंपोनेंट, तो इसमें हमारा ये वाला पार्ट है. सो दिस पार्ट व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, ऑलराइट, दिस पार्ट, दिस रिप्रेजेंट्स योर टेस्टिस. इन केस ऑफ द मेल, दिस रिप्रेजेंट्स द टेस्टिस पार्ट. नाउ टेस्टिस जो होते हैं, दीज आर द मेन reproductive organs in case of the male reproductive system, which is important for producing sperms and also responsible for producing the male sex hormone which is testosterone. तो basically इसके दो फंक्शन होते हैं. एक तो इसको sperm produce करना होता है, ठीक है, so to produce sperm, and apart from this, this is also responsible for testosterone production. Testosterone production, which is the male sex hormone. Clear? ये होता है. So we will now be seeing कि इसका localization की तरफ. Now testis का जो containment होता है, that means testis is primarily localized in a cavity or a sac-like structure which is called as scrotum. तो इसका containment आप देखेंगे ना, तो it usually is contained in the scrotum part. ठीक है. So if we just move into the content part like this, here. Yeah. All right. So you can see that the location of the testis is that it is usually contained in the scrotum. And why this testis is contained in the scrotum? Because scrotum is basically responsible for maintaining 2 to 2.5 degrees Celsius lower temperature than the normal internal body temperature. क्योंकि अगर sperm बनाना होता है ना, तो उसके लिए टेम्परेचर टेस्टिस का लो होना चाहिए, एंड दैट टू ह्यूमन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो कि यूजुअली अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है,
इससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो होना चाहिए. इतना टेम्परेचर जब लो होगा तभी स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा टेस्टिस में, एंड दैट्स व्हाई दिस टेस्टिस इज कंटेन्ड इन दी स्क्रोटम सैक. तो नीचे की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से. दिस अ काइंड ऑफ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट, एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द स्क्रोटम. सो स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस व्हिच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. तो ये हम लोगों ने देखा. ऑलराइट, सो दैट इज द केस. नाउ इन एडिशन टू दैट पार्ट, यहाँ पे आपको फिगर में भी डायग्रामेटिक सेक्शन सारी चीजें दिखेंगे. ऑलराइट, सो ये चीज है, यू कैन सी हियर एज वेल द एंटायर स्ट्रक्चर. ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस along with the different ducts and glands over here. ठीक है. Now one thing which is again very very important in this part is that कि टेस्टिस का शेप एंड साइज कैसा हो जाएगा. So when you are going to look into the testis, so अगर हम again we are going to isolate this testis part. So testis का जो length होता है ना, the length of the testis is usually considered to be 4 to 5 centimeter long. So this is usually 4 to 5 centimeter long, and in case of width, if you are going to see, so this is usually 2 to 3 centimeter wide. So length is 4 to 5 centimeter, but the widthness of the testis is 2 to 3 centimeter in width. All right, and the necessary, and we know कि इसका oval in shape है, so this is usually oval in shape with a length of this and this. Now if you're going to look into the internal structures के बारे में we will be discussing in detail in a different section, but क्योंकि आज हम पहले ये testis के बारे में study कर रहे हैं, so we'll be talking about this in detail now. ठीक है. तो अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, we can just again bring back all the components like this. ठीक है. So ये हमारा testis वाला पार्ट आ गया. Now testis के बाद जो मेन हमारा पार्ट आता है, that becomes your accessory ducts. ठीक है. testis के अंदर में जब हम देखते हैं ना, सबसे पहली चीज यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, that inside testis when we are going to see, all right, so inside testis when we will be looking into, तो उसमें कुछ around 250 compartments होते हैं. ठीक है. So that means each testis is having around 250 compartments, which is written over here as well, you can see. So each testis is having 250 compartments, and those 250 compartments are called testicular lobules. उसको हम testicular lobules बोलेंगे, and each lobule, that means the testicular lobule, if you're going to see, so here each lobule will be containing around 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. So they have the presence of highly coiled structures. All right. And those highly coiled structures are called as your seminiferous tubules. Now why seminiferous tubules are important? क्योंकि ये जो seminiferous tubules होते हैं, they are the main site of sperm formation. ये sperm formation का main site होते हैं, so that's why it's very very important. So we will be discussing about the section of the seminiferous tubules also. ठीक है, इसके बारे में भी हम study करेंगे in the coming lectures. So ये मैंने एक आपको overview दिया है कि inside testis there is 250 compartments, which is called as testicular lobule, and inside each lobule 1 to 3 highly coiled structures are found, which are called seminiferous tubules, and which are actually responsible for sperm formation. तो आपको एक idea लग गया होगा कि sperms exactly कहाँ बनते हैं. तो sperms inside the testis when we are going to see ना, तो testis के अंदर में भी आपको seminiferous tubules के अंदर में they are being formed. तो अगर कुछ हम structures देखते हैं ना, so this something look like, इसका कुछ जो structure दिखेगा आपको, तो ये कुछ oval shape का ऐसा रहता है, and lobules are there like this. इस तरीके का structures रहता है. And this is around 250 compartments which are found over here, and उसके अंदर में फिर usually हमें highly coiled structures दिखता है. तो इस तरीके से highly coiled structures are being found over here.
like this. So ये जो आपको दिख रहा है ना, these are actually the STs, which are your seminiferous tubules, जहाँ पे ultimately sperms बनेगा. ठीक है. So this is the case. तो ये पूरा हम लोग देखें कि कहाँ पे seminiferous tubules present होता है. Now we will also be talking about the section of the seminiferous tubules very soon. All right. Now let us see कि इसमें क्या क्या पहले, but before talking about the seminiferous tubules part, let us take a look into the parts that belongs to the accessory ducts. तो जब हम accessory ducts की बात करते हैं ना, तो total 4 ducts होते हैं. पहले तो मैं आपको बता दूं कि accessory ducts in case of males, if we talk about. All right, so there are basically 4 accessory ducts. All right, that is retitestis, जो कि directly testis से निकलेगा. Then there is vasa efferentia, then epididymis, and vas deferens. तो ये 4 ducts होते हैं which are found in case of the male reproductive system. अब हम इसमें देखेंगे कि ये कहाँ present होते हैं. All right, so for seeing this part, we can just again use the tools. ठीक है, थोड़ा सा मैंने maximize किया है. Now see, if we just slice out the other components, these parts. All right, now. So this becomes the testis. Testis के अंदर से ही आप देखेंगे ना, तो 2 components already निकलते हैं. So 2 components are already found inside the testis. मतलब जो 2 ducts होते हैं, they are internally present inside testis. तो इसी के अंदर में हमें क्या मिल जाएगा, इसी के अंदर में हमें retitestis भी मिलेगा और इसी के अंदर में हमें vasa efferentia भी मिल जाएगा. So this becomes the retitestis part. Since this is not the internal section, तो ऐसा रहता है. And this becomes the vasa efferentia. Internal structures क्योंकि होते हैं. But the 2 structures which are very very prominent over here is your this part, which is your epididymis. So epididymis जो होता है, ये basically loop करता है on the posterior surface of the testis, and this becomes the vas deferens, which you can see. This becomes vas deferens. ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे 4 ducts. Again, if we can just isolate, अगर हम isolation tool use करेंगे, see, this goes like this. ये कुछ ऐसा दिखता है. तो हमें epididymis यहाँ पे दिख रहा है और ये वाला पार्ट जो हमें दिखता है, this becomes the vas deferens वाला पार्ट. ये हो जाएगा. तो ये ग्लैंड्स हमारे हो जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो दूसरा स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे, बेसिकली हमारा ये वाला जो पीछे का पार्ट है, ग्लैंड्स वाला पार्ट हो जाता है. ग्लैंड्स वाले पार्ट को वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो this part which you can see over here, this becomes your seminal vesicles. So this is the seminal vesicles, and seminal vesicles जो होते हैं ये already paired होते हैं. So you can see कि 2 हैं. ये भी आपका seminal vesicle ही है. All right, and this one is the prostrate gland. Prostrate gland जो होता है male reproductive system में, this is usually the unpaired gland over here. तो ये हो जाएगा. And one another again एक internal structure में present होता है, that is the bulbourethral or the Cowper's gland, which is found in case of the male reproductive system. तो 3 glands होते हैं which are specifically found in case of the male reproductive system: seminal vesicle, prostrate and your bulbourethral. तो ऐसा पार्ट हो जाएगा हमारा. ठीक है, so you can see over here, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ग्लैंड्स के बारे में, that
The male accessory ducts includes the retitestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. अब क्योंकि ये ducts होते हैं, so these are primarily responsible for transporting the sperms that is produced from the testis to outside the male body via urethra. तो ये यूरिथ्रा के तो अल्टीमेटली ये मेल बॉडी के बाहर इसको इजेक्ट आउट करते हैं. तो ये अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन होता है जो कि ये कनेक्ट, क्योंकि डक्ट्स हैं तो ये कनेक्टिंग डक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं. लाइक रेटिटेस्टिस इज इन कनेक्शन विद वासा एफरेंसिया, दैट इज इन कनेक्शन विद योर vas deferens. So that's how the connections are, connections are there that connects one organ with the another organ. तो ये चीज हम लोगों ने देखा है और ये कनेक्शंस के बारे में ही यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है. अल्टीमेटली जब यूरिथ्रा तक आएगा, दैट मीन्स इफ आई जस्ट अगेन यहाँ ये वाला पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइक अगेन वी कैन जस्ट फ्लिप दिस मॉडल एंड वी कैन जस्ट isolate this part, this part, ठीक है, ये वाला पार्ट. तो ये जो आपको ये वाला पार्ट दिखता है, this is actually the ureter part which is coming from the urinary bladder. तो ये तो urinary bladder वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, which you can see over here. So this is basically the urinary bladder. This is the urinary bladder और ये जो होता है ये यूरेटर है, ठीक है. वही चीज देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन होगा. सी यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ये पूरा कैसा मेंशन है, ठीक. सो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर व्हिच यू कैन सी. सेमिनल वेसिकल मैंने आपको बता दिया, प्रोस्टेट ऑलरेडी बता दिया है. एंड देन देयर इज योर बल्बो यूरिथ्रल, जो कि क्योंकि ये अंदर की तरफ रहता है सो दैट कैन नॉट बी सीन, एक्चुअली वो दिख नहीं रहा है, ठीक है. देन अल्टीमेटली आपका पेनिस के अंदर में लोकलाइज्ड होता है यूरिथ्रा. सो अगेन इफ आई हैव टू शो यू द यूरिथ्रा पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट होगा जो कि सीमेन को रिलीज करेगा, सो फॉर दैट पार्ट वी कैन जस्ट अगेन all the components, however slicing this part. Yeah, so slicing this part, so this becomes the penis part. All right, so this is basically the urethra part, and the upper part is called as the penis part. So this part which you can see, this is the urethra, जो कि अल्टीमेटली सीमेन को रिलीज करेगा आउटसाइड द मेल बॉडी, दैट मींस स्पर्म्स को रिलीज करेगा आउटसाइड द मेल बॉडी. एंड दिस एंड लास्ट पोर्शन व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस. ये पेनिस का ही पार्ट होता है बट दिस इज कॉल्ड एज योर ग्लैंस पेनिस, ठीक है. एंड इसके मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अगर हम इफ वी लाइक रिवर्ट बैक करें तो this part, this is the penis part, and this penis ultimately represents the male external genitalia. ये हो जाएगा, ठीक है. तो हम लोगों ने देखा कि एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेक्शंस. टेस्टिस मैंने आपको बता दिया कहाँ कंटेन्ड होता है, क्यों कंटेन्ड होता है, वो रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया. देन वी हैव सीन द एक्सेसरी डक्ट्स व्हिच विल बी कनेक्टेड टू वन अनदर सो दैट व्हाटएवर द स्पर्म्स दैट आर बीइंग रिलीज्ड वो एक टारगेट साइट पर जाए. टारगेट साइट मतलब क्या, कि वो बाहर की तरफ रिलीज होना चाहिए आउटसाइड द मेल बॉडी, और वो एक सीक्वेंस में होता है जो कि यू कैन सी दैट इट हैज बीन रिटन ओवर हियर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सीक्वेंस पूछता है. एंड जो लास्ट पार्ट होगा जो कि अल्टीमेटली ओपन करेगा वो हो जाएगा आपका यूरिथ्रा, बिकॉज दिस यूरिथ्रा इज अल्टीमेटली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट दिस इज अल्टीमेटली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इटसेल्फ, एंड वो अल्टीमेटली इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन करता है where the semen will be ultimately stored and released. Then there are glands also जो मैंने आपको बताया, ठीक है. ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया. तो ग्लैंड्स में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि
ग्लैंड्स का मेन फंक्शन ये होता है कि ये सेमिनल प्लाज्मा या सीमेन को रिलीज करते हैं, विच इज हाईली रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फाइब्रिनोजन, इन सब कॉम्पोनेंट, एंड स्पेसिफिकली और स्पर्म, सो दैट एक मीडियम उनको मिलेगा एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म कैन बी इजी. ठीक है, तो दैट इज द केस. तो ये भी पार्ट हम लोगों ने इस मॉडल में देखा, that where these glands are actually being found. यहाँ पे आपको ये mentioned है, which is actually rich in calcium, fructose, certain enzymes and all those things that will actually help in the lubrication of the penis. ठीक है, तो that is the case. So this is about the male reproductive system that we have seen. But one thing which is left in here is the section of the seminiferous tubule, because this is a complete unique thing. Because section of seminiferous tubule has to be related with your spermatogenesis process. वो और section of seminiferous tubules correlatable है, तो वो आपका उस section में आ जाएगा. So we have seen the entire localization of the male reproductive system in this lecture. So that's how we will be talking about the different components, and we will be covering the different topics of the different chapters like this way in the coming lectures as well. जो कि ये फुल फ्लेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज अ फुल फ्लेजेड लेक्चर, सो वी विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स वेरी कन्वीनियंटली एंड स्पेसिफिकली थ्रू द एनसीईआरटी इटसेल्फ, क्योंकि बायो के लिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट. ऑलराइट, तो मॉडल्स के थ्रू जब हम इसको स्टडी करेंगे तो आवर स्टडी विल बी वेरी मच कन्वीनियंट एंड ईजी and very precise to remember things as well. All right, thank you very much.